आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंटरव्यू में गए हो और जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा गया हो आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो? आपको जवाब पता भी था, आपने बहुत प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन फिर भी आपका गला सूखने लगता है और आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। आई गेट इट। जब मैं दुबई शिफ्ट हुई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई दोस्त नहीं थे, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और ना ही कोई ऐसा था जो मुझे जॉब्स के लिए रेकमेंड कर सकता था। बस मैं थी, मेरा रेज्यूमे था और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थे। बट इवन देन आई क्रैक्ड एवरी सिंगल इंटरव्यू दैट आई टुक एंड आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं that why do we get nervous? हम नर्वस इसलिए नहीं होते क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमें एक डर है, fear of being judged, fear of not being good enough और fear of not being fluent। और जब हमारा ब्रेन इस fear को सेंस कर लेता है तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारी सांस फूलने लगती है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है और इसके बाद आंसर्स पता होने पर भी हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक गुड न्यूज है, एक ट्रिक है जिससे आपका ब्रेन काम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अ हार्वर्ड स्टडी बाय एलिसन वुड ब्रुक्स, people who told themselves I am excited instead of I am nervous before interviews and presentations performed significantly better। तो आपको भी बस यही करना है, किसी भी इंटरव्यू से पहले खुद को ये नहीं बोलना कि आई एम नर्वस, बल्कि ये बोलना है दैट आई एम एक्साइटेड टू शेयर माय स्टोरी। और इस एक लाइन से आपका ब्रेन पैनिक मोड से निकल जाएगा। नाउ लेट्स डाइव इनटू द 4 स्टेप्स टू हैंडल टफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। स्टेप नंबर 1, पॉज एंड ब्रीथ बिफोर यू आंसर। जो सबसे बड़ी गलती हम इंटरव्यू में करते हैं वो है जल्दबाजी। अगर आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2 सेकंड का पॉज लेना है और उसके बाद जवाब देना है। दिस शॉर्ट पॉज makes you look calm and in control, and it also gives your brain time to organize its thoughts. Let's take an example. अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है why should we hire you over other candidates? The nervous answer would be, because I'm very hardworking and I can learn very quickly. No. The confident answer will be, that's a great question. I believe my strength lies in how quickly I can adapt and take ownership of tasks. For instance, in my previous internship, I joined mid-project and I was still able to deliver results ahead of the schedule. And I would like to bring the same adaptability here. Dekha? Pause, calm, and be confident. Step number 2. यूज द स्टार मेथड फॉर स्टोरी बेस्ड आंसर्स। अक्सर जब इंटरव्यूअर्स आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं जहां आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो, जैसे कि गिव मी एन एग्जाम्पल और टेल मी अबाउट अ चैलेंज, लोग अक्सर कंफ्यूज होकर बड़बड़ाने लगते हैं। बट द ट्रिक इज टू यूज द स्टार मेथड। एस फॉर सिचुएशन, व्हाट वाज हैपनिंग, टी फॉर टास्क, व्हाट वाज योर रोल, A for action, what did you do, and R for result, what happened. Let's take an example. अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है tell me about a time you faced a challenge at work, the nervous answer would be, I faced many challenges at work, missed deadlines, communication problems, but I managed somehow. The confident star answer is, in my last project, our team missed a deadline. I was responsible for reorganizing the schedule. I created a priority tracker and communicated with the client daily. We finished 1 week earlier the next time. Short, structured, and powerful. Step number 3. Handle I don't know with confidence. इंटरव्यू से पहले हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या होगा अगर इंटरव्यूअर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर मुझे पता नहीं हो। बट लेट मी टेल यू, इट इज टोटली ओके टू से आई डोंट नो, बट यू हैव टू से इट द राइट वे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है
What would you do if you had to manage a project outside of your expertise? The nervous answer would be, I don't know, I've never done it. The confident answer will be, that's an interesting question. I haven't had any experience yet, but I'd start with understanding the key goals of the project and speaking with experts from similar areas. I believe that it's more important to ask the right questions than knowing everything on day one. Clear, powerful answer. Step number 4. Always end with value. कॉन्फिडेंस स्पीकर्स हमेशा अपनी बात को एक वैल्यू स्टेटमेंट पे एंड करते हैं, कुछ ऐसा जो उनकी लर्निंग और कंट्रीब्यूशन को दिखाता है. नेवर एंड एन आंसर ऑन अ प्रॉब्लम, always end it on progress. Let's take an example. अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, tell me about a time you made a mistake. The nervous answer would be, once I missed a deadline because I was careless. The confident answer would be, once I missed a deadline because I overestimated how much work I can handle in a week. This taught me how to delegate tasks better, and since then, every project I've handled has been delivered early. This answer shows growth and maturity. हमें हमेशा ये याद रखना है कि इंटरव्यू एक टेस्ट नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन है. इंटरव्यूअर के पास ऑलरेडी आपका रेज्यूमे है. वो बस ये देखना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह खुद को एक्सप्रेस करते हैं. When you stop trying to perform, you start to communicate. और अगर आपने ये 4 स्टेप अपने अगले इंटरव्यू में यूज किए, then I can assure you, you won't just sound confident, you will feel confident.